हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में हम कुछ उन अपडेट्स की बात करेंगे जो IRCC ने लेट 2023 और अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 में इमिग्रेशन से रिलेटेड रिलीज की हैं। ये अपडेट्स हर उस इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेंगी हु इज़ प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन 2024। वेदर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आना चाह रहे हैं, वेदर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, वेदर आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद वर्क परमिट लेके यहाँ रहना चाह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को या किसी गार्डियन को पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री से बुलाना चाह रहे हैं। इन अपडेट्स को हर उन कैटेगरी के हिसाब से मैंने डिवाइड करके कंसोलिडेट करके, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स आई हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारी यूट्यूब्स बनी हुई हैं ऑन डिफरेंट अपडेट्स। इस वीडियो में मैंने उन सारी वीडियोज़ को कंसोलिडेट करके एक वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें कंबाइन की हैं ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और इस वीडियो के थ्रू आपको सारे वो अपडेट्स पता चल जाएं जो IRCC ने कैनेडियन इमिग्रेशन में अपडेट्स कर रहा है या प्लानिंग ऑन डूइंग दोज अपडेट्स इन 2024 दैट कुड इम्पैक्ट यू। टू स्टे अप टू डेट ऑन एनीथिंग कैनेडियन इमिग्रेशन रिलेटेड और कैनेडियन लाइफस्टाइल रिलेटेड फॉर स्पेशली फॉर देसीज फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और फ्रॉम एनी अदर कंट्री हु आर प्लानिंग टू मेक कैनेडा देयर न्यू होम, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो पहले हम बात करते हैं अगर एक्सप्रेस एंट्री की, तो एक्सप्रेस एंट्री में बहुत अनसर्टेनिटीज़ हमने देखी ड्रॉज में या काफ़ी सारी एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में इन 2023। तो 2024 में क्या हो रहा है कि IRCC इज़ वेरी कमिटेड टू मेक द डिमांड वेरी अलाइंड टू द लेबर मार्केट इवैल्यूएशन। जो ओवरऑल कैनेडियन इकोनॉमी की लेबर मार्केट इवैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से कैटेगरीज में भी आपको अपडेट नज़र आएगी। उसके हिसाब से आपको जो इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट है या जिस टाइप के इमिग्रेंट कनाडा में आ रहे हैं आपको उसमें अपडेट्स नज़र आएंगी। जो कैटेगरीज इस वक्त वेरी हाई एंड डिमांड हैं 2024 के लिए, उसमें नॉर्मल ट्रेड्स उसमें आ जाते हैं, उसमें स्टेम उसमें आ जाता है, ट्रांसपोर्ट इज़ गोना बी अनदर ह्यूज वन फॉर 2024, या जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हु आर विलिंग टू और प्लानिंग टू कम टू कैनेडा उनके लिए बड़ी मेजर अपडेट्स आने वाली हैं इन 2024। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ स्कोर में यू शुड एक्सपेक्ट मेजर फ्लक्चुएशंस इन 2024। एक्सप्रेस एंट्रीज के ड्रॉ में यू शुड एक्सपेक्ट मेजर फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दोज ड्रॉज बाय IRCC। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ साइजेस could potentially increase because IRCC is planning to increase the gap between the draws. Draw sizes, now larger sizes draw could potentially impact in decreasing the score. So 500 still stays as a very reasonable score, but you will see some fluctuations based on different category buckets in 2024. Some major updates in 2024 are going to be increase in the requirement of proof of fund, especially for the international students. So you'll see some major changes coming effective from January for international students. Some major updates, and another thing that's coming is the launch of caregiver program. So you'll see a lot of immigrants or a lot of potential immigrants who fall under the category of caregivers will see some influx or increase in their numbers as Canada is seeing potential increase in the total immigrants they want in Canada under the caregiver category. So revamping the financial landscape, the first major change that you'll see, as I said before, is in the proof of fund piece. So the GIC key previously for इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में रिक्वायरमेंट थी वो $10,000 थी। दैट अमाउंट फॉर द GIC हैज़ इंक्रीज नाउ टू $20,635. Now this is a significant shift, it's more than double, but considering the fact कि overall Canada में and globally things are super expensive, inflation बहुत high है हर जगह, तो $10,000 as a proof of fund is not sufficient enough for an international student. So the Canadian government and the IRCC have decided to increase that number to $20,635. So the caregiver program की जो मैंने बात की, that pilot is going to start soon, and उसमें स्पेशली जो caregiver की हम बात कर रहे हैं वो child care वाली कैटेगरी में कर रहे हैं। तो as I said earlier, if you fall into the category specifically in the child care caregiving service, then you have a very high probability of moving to Canada in 2024. Now keep in mind this category fills up very quickly, so stay up to date on any news that's coming out of IRCC, Canadian Immigration Services, say, to make sure as soon as the information is out, you are the first one to apply under this category. So family sponsorship जो हमारा PGP कोटा है उसमें बड़ा मेजर बूस्ट आया है। तो PGP stands for Parents and Grandparents. So especially हमारी कम्युनिटी में
जो देसी कम्युनिटी है कनाडा में, वी वेरी हेवीली रिलाई ऑन आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर देयर सुपरविजन, फॉर देयर गाइडेंस, फॉर द सपोर्ट दे कैन प्रोवाइड व्हेन दे लिव विद अस इन कनाडा। तो ये नंबर 2023 में 28,500 था। इन 2024 ये नंबर इंक्रीज होके 32,000 हो गया है। सो Canadian government as a whole is encouraging us to bring our parents and grandparents into Canada to provide us support, so for us to provide them support. So ये number बड़ा major increase हुआ है, तो make sure you keep an eye if you have a parent or grandparent that you're willing to move to Canada with you, then this 2024 year is going to be the right year for you, because number significantly increase हुआ है 28,500 से 32,000. Expectation is going forward this number will continuously grow up or move up in numbers. So this is another great news for especially for our Desi community. Next इसमें जो major update आया है वो PNP program, जो Provincial nomination program है, उसमें major update ये आया है कि अभी तक क्या हो रहा था कि Canadian government और जो national immigration body है, Canadian Immigration Council, वो was the overlooking body on anything PNP. Now in 2024 सारी जो autonomy है उसकी that is given to individual provinces. So basically हो क्या रहा है अब कि individual provinces will look at their labor situation, their labor market assessment, and increase or decrease the numbers, change the categories based on the demand of that province. So no more a broader umbrella from the Canadian government. Each province has more autonomy now to bring in people, the type of immigrant in their province, what they really need. So what that really means for us as immigrant is that if you're coming into a category, a lot of the time what happens is कि हम किसी category में आ तो जाते हैं लेकिन jobs available नहीं होती. Part of the reason उसका यही था कि वो Canadian broader umbrella और broader labor market assessment के ऊपर उसकी assessment हुई भी होती है और province में उसकी उस हिसाब से demand नहीं होती. To give this autonomy more to the provinces, तो वो डिमांड और सप्लाई जो है इज मोर कंट्रोल्ड, एंड व्हेन अ न्यू इमिग्रेंट कम इनटू अ प्रोविंस थ्रू पीएनपी और अंडर एनी सर्टेन कैटेगरी, chances are very high that you'll find a job within that category in the province that you choose to live in. So another major change जो आई है Canadian government ने रिलीज की है for 2024 is almost 500,000 immigrants. So I think it's 485,000 immigrants to come on PR वाले जो categories होंगी उसमें. That's a big number from previous years. This number is going to continue to go up in 2025, 2026, but for year 2024 is 485,000 people. Now the expectation is every year अगर ये 10% भी बढ़ाते हैं तो you're looking at 5.5 lakh, 550,000 next year in 2025, and then almost 600,000 in 2026. So a lot of great news. Numbers are increasing. As I said in my previous videos, COVID के बाद things have changed drastically. A lot of people are thinking of leaving Canada for certain reasons. A lot of people are willing to make Canada home. A lot of baby boomers, people who are in their 60s and later in their ages, are retiring from certain jobs. तो वो एक major bubble वहाँ पे बन रहा है. तो इन bubbles को fill करने के लिए Canadian immigration is working very aggressively to revamp the categories, tweak the scoring system, give more autonomy to individual provinces, just to make sure कि जो labor market की assessment है और जो real need on the ground है उसको वो immigration के through उस gap को पूरा करें. So once again, please make sure you are staying up to date on any of these changes. Please subscribe to my channel. I try to make videos on different topics related to immigration, on provincial nomination program, कोई work permit पे या different ways of moving to Canada. This is the focus of this channel. Please subscribe to stay up to date on what's happening. Please subscribe to stay up to date on any new openings that are coming out soon. Hit the bell icon so you get the notification as soon as I have a new video up, so you can be up to date right as soon as the news has come out. So thank you so much for watching. I appreciate your support. Hit the bell icon. Please leave a comment on the type of videos you want to watch, or if you have any questions related to immigration or life in Canada, I'll be more than happy to answer those questions. In the next few videos, I'm planning on bringing in some experts from the industry to talk about their experiences with some immigration consultants I'll bring on board to talk about different ways of immigration and to give you knowledge firsthand from the real experts. So stay tuned. I'll see you in my next video.